Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम में लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा नेजा डैंग। Thank you, Vishal. Yes, friends, the headlines first. GST collections jump 13% year-on-year to 1 lakh rupees and 72,000 crore in October. Key domestic indices end in negative territory for the second straight session. Nifty closes below 19,000 mark. And mixed trends were witnessed in the global market. Most Asian markets ended with gains, while European markets were trading subdued. इस वर्ष अक्टूबर के महीने में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 13% बढ़कर 1,72,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ हुए बंद। निफ्टी 19,000 के स्तर से कम पर हुआ बंद और वैश्विक शेयर बाजारों में मिला-जुला कारोबार। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद, जबकि यूरोपीय बाजारों में रहा नरमी का रुख। पहली बड़ी खबर आज की। इस वर्ष अक्टूबर महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,72,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13% अधिक है। कुल राजस्व में से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर 30,062 करोड़ रुपए, राज्य माल और सेवा कर की हिस्सेदारी 38,171 करोड़ रुपए, एकीकृत वस्तु और सेवा कर 91,315 करोड़ रुपए और उपकर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। Yes, the gross GST revenue collected in the month of October this year is over 1,72,000 crore rupees. Finance Ministry said the gross GST revenue for October is 13% higher than that in the same month last year. Out of the total revenue, central goods and service tax is 30,062 crore rupees. State goods and service tax is 38,171 crore rupees. Integrated goods and service tax is 91,315 crore rupees and cess is over 12,000 crore rupees. The ministry said the total revenue of centre in October after regular settlement is 72,934 crore rupees and the states is 74,785 crore rupees. Hello. जी, हमारे विशेषज्ञ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जयंता दास, आर्थिक विशेषज्ञ। हेलो। हाँ जी जयंता, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी जयंता, आज जीएसटी संग्रह के जो आंकड़े आए हैं, जीएसटी कलेक्शन के, वस्तु और सेवा कर संग्रह के 1,72,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है और अक्टूबर महीने में पिछले साल की इसी अवधि में जो है ये 13% है पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले। अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी रोबस्ट इकोनॉमी की ओर संकेत दे रहा है ये। बिल्कुल जी, एक कंजम्पशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि का वजह से ये उछाल हम लोग देख रहे हैं, करीबन 13% का करीब इस साल। और इसके अलावा थोड़ा बहुत बिजनेसेस में जो नोटिस मिला था, कुछ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स भी, उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हुए। एक अच्छा संकेत कहता है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अगर जल्दी सेटल हो जाता है तो उसमें रेवेन्यूज भी आ जाता है जीएसटी के तौर पर। तो ये तीनों चीजों का वजह से मैं मानता हूँ कि इस बार अक्टूबर में जो आंकड़े का उछाल आया है उसका एक नतीजा भी है। And Janta, when we see these figures, they're very heartening indeed. Does it mean that, of course, it means that the economy is doing very well. Does it also mean that there is greater confidence of the common citizen in the countries or in the government's, managing of funds? We see a lot of spending now happening in infrastructure every day in almost all the states. Does it also give us confidence? The country has a confidence that our money is being well spent on infrastructure and we are moving towards a $30 trillion economy, as the government is saying, in another 2 decades. See, what's important to understand is any good increase in collection of taxes reflects the state of affairs in the economy at this point of time. What's also important to understand is the compliance of taxes is an important part. There were taxes in the form of sales tax and various other tax previously.
the whole purpose of breaking into a GST regime, and it has been long debated, well spoken of, well researched and well written of for years, is to understand that a robust tax system is critically important for any developed nation to grow and take a path forward. So from that angle, I guess GST more than enough in the ever since its inception has laid down that track of growth and has also brought in robust GST compliance with whatever tax structures the government is following for GST. Another caveat I want to add, and that's important also, is to understand that there has been a spate of government notices sent to various businesses for under-reporting of GST or GST misses and things like that. The settlement and of such disputes is also a critical, important factor which speaks of a robust economy. And I think that's important to understand that the settlements has also happened in a very, very profound manner and in a very, very amicable manner in the sense that has also led to an increase in revenue. So not only the people who are paying GST in form of businesses or individuals, but also in terms of compliance as well as whatever deficit remains in forming that compliance, the government's responsiveness to have a quick attempt to resolve these disputes is an important inclination of how healthy the tax structure gradually is becoming. जी जयंता, आपने टैक्स कंप्लायंस की बात की, आपको लगता है कि अभी जो है ये जीएसटी का जो कंप्लायंस का जो दायरा है उसको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, और जो जीएसटी दरों में भी या जो कहें हम कि जीएसटी जो जमा करने की बात होती है, जीएसटी कंप्लायंस की बात होती है, उस प्रक्रिया को भी और आसान बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि और ये जो संग्रह का जो आंकड़ा है ये और आगे बढ़े चल के? देखिए, दिस इज अ वर्किंग ऑलवेज। कोई भी टैक्स या कर्ज का कोई जो नीति होता है, सॉरी नॉट टैक्स का जो भी नीति होता है, तथागत रूप में अगर आप देखें कि इट्स नॉट वन अनाउंसमेंट ऑफ अ पॉलिसी डिसीजन। वक्त के साथ साथ हम सबको पता है रिक्वायरमेंट, कमोडिटीज का डिलीवरी मॉडल, उस डिलीवरी में जिस तरह का प्रयोग हो रहा है, अब जैसे जीएसटी प्रयोग होता है, जीएसटी का इंटरप्रिटेशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज में, ये लगातार चर्चा होते हैं। और उस चर्चा का दौरान जो राइट फ्रॉम जीएसटी काउंसिल एट द टॉप टू एकदम लोएस्ट लेवल में जो जीएसटी कलेक्शन का जो ऑफिसर होता है, टैक्स कंप्लायंस ऑफिसर जो होता है, इसके अलावा जो एडजुडिकेटिंग बॉडीज होते हैं जब डिस्प्यूट्स होते हैं, ये सारे प्रॉपर तरीके से लगातार फंक्शनिंग करना जरूरी है। और साथ में सिर्फ ये नहीं कि इसमें वन स्टॉप सोल्यूशन कि आप नीति बना दिए, आप 8%, 12%, 18% का जीएसटी लगा दिए और वहीं कहानी खत्म हो जाता है। इसका वर्किंग मोशन एज ए सेड, और वक्त के साथ साथ बहुत जरूरी है टैक्स सिस्टम, टैक्स स्ट्रक्चर और साथ में कंप्लायंस, इस तीनों को एक साथ एफिशिएंट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं मानता हूं कि जीएसटी रेजिम के द्वारा जिस तरह का निर्णय लिया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर होता है, केंद्रीय सरकार होता है, राज्य सरकार का तरफ से वित्त मंत्री होता है जीएसटी काउंसिल में, तो वो स्ट्रक्चर के रूप से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफी डेप्थ आता है। और जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी का साथ साथ जैसा हम सबको पता है, जब भी जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है लगातार कम्युनिटीज को बहुत चर्चा होता है, शायद इस चर्चा में इस कम्युनिटी में वृद्धि होना चाहिए या घटाना चाहिए, कुछ वो सब एजेंडा में आता है। तो जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट अ वन डे वर्क, इट्स अ वर्किंग मोशन कंटिन्यूसली। आज अगर लग्जरी कार्स में एक एक्स जीएसटी है तो जरूरी नहीं है कि अगले 3 साल 5 साल तक वही होना चाहिए। मार्केट का साथ साथ, डिमांड का साथ साथ और जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो रहा है उसका साथ साथ भी इसमें बेशक जरूरी होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप हम कहेंगे, आप देखते शुरुआत में जब रेस्टोरेंट में आप जब खाना खाने जाते थे 18% जीएसटी लगता था, उसमें काफी हद तक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का डिमांड रहा, सरकार की तरफ से सुनवाई किया गया और उसमें बहुत ही रैशनल स्ट्रक्चर लेके आ गया, जहां पर उन्होंने बताया कि आप 5% टैक्स दीजिए जीएसटी और आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस तरह का निर्णय लगातार हर कम्युनिटी में आता रहता है, सरकार उसमें बैठते हैं, जीएसटी काउंसिल उसमें बैठ के निर्णय लेते हैं। और मैं मानता हूँ यही एक प्रॉपर मैच्योर टैक्स स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा सिंबल यही होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए और साथ में लगातार माइलस्टोन बेसिस में मीटिंग के साथ साथ कम्युनिटीज के ऊपर एक नहीं 10 बार आप बेशक आकर राय लीजिए, चर्चा करिए।
Yes, you're right. The government has always said that we can't have a one slab GST structure, because you can't, as you just mentioned, a luxury item will invite more tax, a higher tax than the non-luxury item. And the last we heard was that the GST on agarbattis had come down, and we also heard in the last few days was the 28% was implemented on gaming, right? Yeah. जी, जनता, ये बात हमेशा से होती रहती है कि जीएसटी के दायरे में और भी वस्तुओं को लाया जाए, और ख़ास तौर पे जब पेट्रोल और डीजल की बात होती है तो इसमें मतभिन्नता रही है राज्य सरकारों के बीच में भी और केंद्र सरकार के बीच में भी। क्या जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल डीजल को लाया जाता है तो ये जो जीएसटी संग्रह है ये और बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या इससे कुछ और फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं मानता हूँ कि पेट्रोल का डीजल का मामले में देयर इज अ प्राइस सेंसिटिविटी, बिकॉज हम सबको पता है कि एक चुनाव का मुद्दा बनता है, ये राजनीतिक चर्चा का मुद्दे बनता है हमेशा। हर महीना अब ज्यादा वृद्धि हो जाता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से अलग कैंपेन चलता है कि जो भी ऑपोजिशन में बैठा है राज्य सरकार में या केंद्र सरकार का ऑपोजिशन में, जो भी पार्टी वो तरह मुद्दे को सामने लेके आता है, बिकॉज इट अफेक्ट वन एंड ऑल, स्टार्टिंग फ्रॉम जो लोग सिर्फ गाड़ी या बाहर से कर रहे थे वो नहीं, आपका सारे फूड कमोडिटीज को भी असर होता है। तो इसमें बहुत दिनों से एक चर्चा इसमें जारी है जहाँ पे कहा जाता है कि भाई जीएसटी रेजिम में क्यों पेट्रोल एंड डीजल को लेकर नहीं आ सकते। उसमें राज्य सरकार का देखिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है फ्रॉम फ्यूल से, हम सबको पता है जी। और जिस वजह से अलग अलग राज्य में अलग अलग दर होते हैं। अगर आप मेरा निजी आप व्यूज मांगते हैं तो मैं मानता हूँ बेशक इसको जीएसटी रेजिम में लेके आना चाहिए, लेकिन वो निर्णय फाइनली डिपेंड करते हैं जीएसटी काउंसिल के ऊपर। और ये हमें देखना है कि उनका क्या चिंता है इसमें, और क्यों इतना डिमांड के बावजूद भी अगर लागू नहीं हो रहा है तो शायद वो लोग कुछ और चर्चा करके थोड़ा और डीप रीजनिंग निकालना चाहता है। लेकिन अंडरलाइन बात ये जरूर है कि स्टेट गवर्नमेंट उतना आसानी से स्ट्रक्चर को छोड़ना इसलिए नहीं चाहता बिकॉज इसका मेजर रेवेन्यू सोर्स है। जी, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 63,600 अंक और निफ्टी 19,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ। विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर आंकड़ों से निवेशकों की धारणा थोड़ी बहुत प्रभावित हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.44% के नुकसान से 284 अंक लुढ़ककर 63,591 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.47% टूटकर 90 अंक के नुकसान से 18,989 पर आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.35% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुए। Today, the key domestic stock indices ended on a negative note for the second session in a row. Nifty closed below 19,000 mark, while Sensex ended below 63,600 points as weak manufacturing data weighed on the investors' sentiment. The Sensex declined 284 points or 0.44% to close at 63,591. NSE Nifty also tumbled 90 points or 0.47% to settle at 18,989. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.35% and the small-cap index also slipped 0.10%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 25 companies declined, while only 5 stocks ended in green. Asian Paints declined 2%, Tata Steel fell 1.80% and Nestle India slipped 1.60%. On the other hand, Sun Pharma jumped 2.5%, Bajaj Finserv rose 0.5% and Reliance Industries ended with 0.35% gain. In sectoral indices at the BSE, 16 sectors ended in red, while 4 logged gains. Metal sector declined 1.45%. Power and energy sectors both ended with over 1% loss. On the other side, realty sector jumped over 1.5%. Telecommunication gained over 1%. Oil and gas sector rose 0.35%.
The overall market breadth was negative territory as shares of 2,011 companies declined, while those of 1,637 companies gained. A total of 135 shares remained unchanged. Jan, the two queries here. One is that we see that the Sensex has been largely between 63,000 and 67,000 over the last few weeks. Does it mean that this is not the time? That's one school of thought, that this is neither the time to buy nor to sell. So it's just been almost, in between. And second query is what are the factors which have led to this the Sensex ending below at 63,600 points? Well, see, I must agree to the first which is that there's a lateral movement. There is a sense of disinterest which gradually creeps into a retail investor's mind because he doesn't see charts, he doesn't see stocks moving or falling. So the sense of excitement goes back from there, and he waits, watches, and tries to figure out what in this market. Because typically, even if the stocks are going down, people feel it's a good time to buy, and when the stocks are going up, they believe it's a good time to book profit. But as I said, when it moves laterally, then obviously you have a confused sense of investor who doesn't know what to do. But then if you ask me frankly, and I've always said this previously also, at any level of the Sensex, there are opportunities to buy and sell depending on what you're buying and selling. Today, typically the market had a fall in the IT sector, basically driven by the fact that the rate of interest are not going to get changed by the Fed at around 11:30 p.m. Indian Standard Time. Press briefing is awaited in terms of what the Fed boss believes is going to happen in the next 2-3 months. Now that speech, although none of the people or none of the stakeholders is expecting much change or any change in the rate whatsoever, but the speech will have a lot of value in terms of where the markets would be placed in the next couple of months. So every single sentence, every single word, and sometimes, as you know, people go overboard in trying to see his facial expressions and trying to understand what extent he believes the gravity of the situation is. In terms of statistics, we all know the U.S. economy is doing quite well. Inflation is still high, not at the 2% levels which the Fed believes to be come down to actually take a call. And we have left room saying that in December there could be another rate hike. So it's a hawkish pause is the word, is the phrase rather they're using at this point of time. A hawkish pause. Now taking a cue from here, if you come back to the Indian market, we just discussed at length the story of how GST has increased by 30%, which is a good indication of the fact that this is the start of the business season, as we all know, from September onwards. And it's a good reflection of increase in consumption as well as economic growth that has led to a good collection of GST figures. But in terms of purely stock market, mechanics or stock market fundamentals, what I do believe is IT stocks are going to remain a bit tardy, specifically on the fact that with interest rates remaining at these levels, there would be some challenges on their top line numbers as well as the bottom line numbers are going to be effectively hit from there. So IT stocks typically should not be a flavor of at least the next 2-3 months for any retail investor for a time. Although I do believe that some good IT stocks are at good levels to entry at this point of time. Because one can predict the actual level to which these IT stocks will go and then rebound. That's impossible to predict. So if you believe, like me personally, believe that the IT stocks have a decent future in terms of returns for the next 3 years, not the next 3 months or 6 months. If you can wait on for the next 2 to 3 years, it's a good sector to invest in. Domestically, Indian sector also, as I said, they are going to factor in the status of affairs which is happening in Israel and in the Gaza area. And even the FOMC believes that that should be factored in as a risk factor when they're assessing the global situation. So that's an important cue. Although personally, once again, I believe it's going to be a very long-run war, just like what we are seeing in Ukraine. Yeah. People finally, not be having an hourly interest. They'll not lose interest. Mark my words. I'm not saying that people will lose interest, but they'll not be having an hourly basis interest of what's happening in that area. And it will be rather a footnote in terms of a daily news of what's happening. So
market will gradually absorb this story and market would be resilient to any moves unless something really drastic happens. जी So that's the other part what's happening globally. But locally, I believe there is a strong fundamental story which is being, laid out. We are heading to an election year, so I don't expect any negative surprises in terms of policy, announcements from the government. On the contrary, there would be good set of policy surprises which keeps on happening at a regular level, specifically on election year. So that is certainly expected. And from here on, as I said, at the 63,000 levels, if we calculate the lower level of the market at which is strung around, not the 65,000, it's still an extremely good level to remain invested and try to figure out your new investments from here. जी जयंता, आज निफ्टी बैंक इंडेक्स को देखें तो आज गिरावट रही है और पिछले 3 महीनों में बैंक निफ्टी में हम 6% की गिरावट देख चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर और खासतौर पर फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर आपको कुछ तस्वीर चिंताजनक लगती है, क्योंकि बैंकों के मार्जिन पर अब लगता है दबाव है, डिपॉजिट्स पर रेट बढ़ाने को मजबूर हुए हैं बैंक। देखिए, बैंक का मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स ऑलवेज। और बैंक का पिछले साल अगर आप देखें, पिछले 3-4 महीना का अवधि अगर छोड़ के उसका पहले अगर देखें, इट हैज बीन वन ऑफ द टॉप 3 परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, हम सबको पता है। और खास करके पीएसयू बैंक का बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ और रिटर्न रहा स्टॉक मार्केट में। कोई बैंक तो 2-3 भी कर दिए अगर आप इस बैंकिंग का मूवमेंट देखें 52 वीक का लास्ट मूवमेंट। तो इस दौरान बेशक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, मार्केट में स्लगिशनेस आया है और उसका सीधे असर बैंक में भी थोड़ा बहुत बेशक गिरेंगे, लेकिन बैंक का जो ओवरऑल लॉन्ग रन स्टोरी है इट स्टिल रिमेन्स वेरी बुलिश एंड पॉजिटिव। मैंने 2 हफ्ता पहले इसी प्रोग्राम में कहा था कि आप निजी क्षेत्र में बैंक का टॉप 3 बैंक, हम यहाँ पे स्टॉक सिर्फ देते नहीं है, स्टॉक का नाम लेते, लेकिन निजी क्षेत्र में टॉप 3 बैंक और पीएसयू क्षेत्र में टॉप 3 बैंक लेके ये सिर्फ 6 बैंक के बीच में अगर आप निवेश करके अपना पसंद के हिसाब से इन्वेस्टेड रहे, मैं मानता हूं कि आपका रिटर्न अगले 2-3 साल में सालाना 18 से 20% पर ईयर आराम से आपको मिल सकता है। So that's how I believe the banking sector is at this point of time. Right. After the banking sector, let's talk about realty sector, Jayanta. Today, our report says realty sector jumped over 1.50%. What do you think is the reason for this kind of jump in this sector? Well, I don't want to comment on a daily jump because obviously daily jumps are sometimes also influenced by, immediate profit booking or immediate, stock losses. But on the whole, realty sector gradually is coming up much faster than what we expected post-COVID. And the reasons have been basically 2. One is there has been quality inventory which has come back in the market at right prices. As a result of it, demand has flown in. And the other part is with the stock market, really at the 65,000 plus levels, people would have liquidity available in the market to go in, because in a scenario where rate of interest is so high domestically, for the realty sector to pick up is something which speaks of the buoyancy of the real estate sector. और अब रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83 रुपए 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 106.85 पर चल रहा था। रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच आज अधिकतर एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। जापान के निकेई में 2.51% का उछाल आया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% से अधिक के लाभ में रहा। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के हैंगसेंग में थोड़ी बहुत मामूली गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान गिरावट का रुख था। लंदन का FTSE 100 0.18% फिसल गया, जबकि फ्रांस का कैक 40 0.6% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। जर्मनी का डेक्स 0.03% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। U.S. stocks ended higher on Tuesday as investors were eagerly waiting for Federal Reserve's monetary policy update. The Dow Jones Industrial Average surged 0.40%, S&P 500 rose 0.65%, and Nasdaq Composite jumped about 0.5%. और
अगली खबर सरकारी ई मार्केट प्लेस से जुड़ी हुई। जीईएम यानी कि सरकारी ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 47% या फिर कहें तो 1,50,000 करोड़ रुपए की सेवा वृद्धि दर्ज की है। इसने कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सेवाएं प्रदान की हैं। कोल इंडिया लिमिटेड 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर के साथ सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। जीईएम श्रम बल से लेकर वाहनों तक सेवाएं प्रदान कर रहा है। जीईएम कंपनियों की लागत बचाने और विशेष रूप से बीमा में मदद करने के लिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए के बजाय खरीदारों से सीधा सौदे करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। जीईएम ने कहा है कि छोटे खरीदार जो महंगी मशीनरी नहीं खरीद सकते, उनकी मदद के लिए विशेष रूप से मेडिकल उपकरणों को पट्टे पर देने की अनुमति दी गई है। राज्य खरीदारों के लिए भी एक समर्पित श्रेणी बनाई गई है। So, Jayanta, the fact that now GEM is expanding to services and also from labor force to vehicles, also getting more dimensions into its ambit, does it mean that it's evolving well and it's rearing to go? Of course, we see the growth of 47% in the current financial year. Well, I personally believe GEM is one of the fantastic stories which has been silently unfolding, yet very popular among government departments, buying agencies, because that's how it's designed and rooted. What also needs to be understood is the expanding scope of GEM, and as you rightly said, now being extended to services and all. The reach of GEM is tremendous, and as I said, it is the domestic Amazon of India in terms of volume, in terms of reach, and also in terms of people, a common people who is in some sort of business can just register instantly in GEM and start supplying to government, which was unthinkable 10 years ago. Yes. Where you had to go through a huge process of tendering and you had to have power and access and technological, efficiency and things like that. So in that sense, GEM has created wonders. I myself personally know of so many vendors who are having small shops and supplying to big government departments to GEM. So that's a fantastic story. It's a silent performer, and as I said, it's a great achievement for GEM to be at this stage at this time. Yes, and the fact that from somebody at the bottom of the pyramid to huge institutions, all are taking advantage of this, and that is very much in line with Sabka Saath, Sabka Vikas approach of the government. Which means you reach everybody, you include everybody, all-inclusive growth, precisely. Well, let's move on. What is Market Mantra without oil? And oil prices saw a jump of about 2% today ahead of the keenly watched meeting of the US Fed Reserves for clues on interest rate policy. In intraday trade, Brent crude was trading at $86.56 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $82.59 per barrel when reports last came in. How do you view the situation, oil situation, in the line of the war that's going on in the Ukraine war on the one side and the Israel-Palestinian war? A brief comment, Jayanta. Well, specifically the price of oil, I believe, would remain at a bit of an uncertain level, specifically for the next 3 to 6 months, despite the wars which are happening. So, if you ask me, it's a very, very complex scenario in terms of how oil-producing nations are trying to, build up a structure where they believe that the oil prices can be shot up. But I don't think it's going to happen that easily. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में आज दिसंबर में आपूर्ति किया जाने वाला सोना 60,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डालें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,992.40 प्रति औंस पर चल रहा था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी एमसीएक्स पर की वायदा कीमतें आज 479 रुपये टूटकर 71,190 रुपये प्रति किलो पर चल रही थीं। जयंता दास, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। And friends, before we close, as a reminder, the headlines: GST collections jumped 13% year on year to rupees 1,72,000 crore in October. Key domestic indices end in negative territory for the second straight session. Nifty closes below 19,000 mark, and mixed trends were witnessed in the global market. Most Asian markets ended with gains while European markets were trading subdued. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra, friends. This is myself, Lalema Aneja Dang, with my co-anchor Vishal Sharma signing off. Namaskar. नमस्कार।
citizen.